काय जॉब करता म्हटलं तुम्ही? जर्नलिस्ट आहे संयुक्त वाणीमध्ये. आवडतंय फील्ड? होय, आवडतंय. काय आवडतं? हाय हर्षद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए. एंड टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली आपके फिल्म के ऊपर जो जिसका लाइक वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रॉटरडम, जो यहाँ पे मुंबई में मामी में भी प्रीमियर हुआ था एंड ऑल्सो वेंट ऑन टू लाइक हैव इट्स प्रीमियर इन धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. एंड योर फिल्म्स नेम इज फॉलोअर. एंड जो आपने लिखा भी है, डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी किया है, और वो यू आर वन ऑफ द स्टार ऑफ दिस फिल्म, वन ऑफ द एक्टर ऑफ द फिल्म. सो यस, सो लेट्स बिगिन दिस इंटरव्यू. हर्षद, पहले तो ये बताइए कि क्या आपका जर्नी, फिल्म मेकिंग जर्नी रहा है. लाइक आई स्ट्रेट वे वांट टू आस्क यू दैट कि आपका इस फिल्म के पहले तक आपका क्या फिल्म मेकिंग कैसा जर्नी रहा है सर? Firstly, thank you, Sanket, for having me. So glad to do this. I mean, filmmaking journey थोड़ा एक in a way थोड़ा एक simpler journey रहा है. I started, so I was an engineering student. Yeah, I was an engineering student, and when I started doing my engineering, I realized कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें. And this was the time why I also discovered Windows Movie Maker on a computer. And that really piqued my interest कि ये क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं. तो I realized कि इसमें कुछ वीडियो डालने पड़ते हैं, तो एक साथ ऐसे लगा तो इसका एक फिल्म जैसा कुछ बन जाता है. सो आई हैड एक वीडियो कैमरा था घर पे, तो मैंने बस दो तीन चीजें ऐसी शॉट्स लिए अलग अलग डायरेक्शन से. मेरे भाई को लेके आई मेड सम लाइक एक्शन piece, like a small action piece, and I put it together on Windows Movie Maker, and I just let it play. And that was the first time, that kick that I got, just putting 2 3 shots together and watching it in one this thing, and then realizing ki, oh, like keep telling a story visually like that. And that really got me hooked to ki ye bahut hi like I want to keep trying this, I want to keep doing this. So this is how it started. So I started doing some home videos karke edit karna, and then slowly it went on to making some short films with friends from college. I have to tell you this, that I made Dhoom 3 before the original Dhoom 3 came out. Oh. So it was basically an action film that I made with my friends, and I called it Dhoom 3. तब Dhoom 3 आया भी नहीं था. अच्छा अच्छा, ओके. Uh, सो आपके मन में ये so था कि ओके, अगर कोई धूम 3 बनाएगा इट वुड बी लाइक दिस, कि अगर कोई नहीं बना रहा है तो चलो मैं ही बना देता हूँ वैसे. समथिंग लाइक दैट, नहीं राइट? नहीं, वो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पता था कि ओके, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, बट ये मैं दिखाऊंगा किसको, कौन देखेगा मुझे. लाइक व्हेन यू मेक अ फिल्म यू वांट सम फीडबैक, नो, कि क्या क्या है, कैसा लग रहा है, ऑल दैट. आई न्यू कि अगर मैं कुछ बना दूंगा, दोस्तों को दिखाऊंगा, फैमिली को दिखाऊंगा, दिल से कि वाह वाह, वेरी नाइस एंड ऑल दैट. बट यू नीड सम जेन्युइन पीपल टू ऑल्सो कॉमेंट ऑन इट, राइट? सो giving a title like Dhoom 3 and putting it on YouTube, just people would search for it. No, and random people would come on it and they will watch it, and they would then comment in the this thing comment section में अपने जो भी bluntly जो उनको लगता था वो डाल देते थे. तो उससे और आइडिया आता था कि क्या सोच रहे लोग, क्या लग रहा है उनको इस स्टोरी के बारे में. इस So that's why it was named like that. So that's ओके. how it began initially. And very early this thing, like also then obviously then you get interested in कि कौन सी फिल्में तुम्हें ज्यादा ऐसी अफेक्ट की है, जो that made you sort of go there. So like during that time it was a film like Lagan, which had come out, and I was really like, कि is sort of influenced by it, ki, the power of storytelling and this thing. So that sort of stayed with me. And uske baad then I decided
कि इंजीनियरिंग नहीं हो रहा है, आई कांट कंटिन्यू दिस, मन नहीं लग रहा है, आई वांट टू डू फिल्म्स. So that's how I quit my engineering and I started. ओके ओके सो बट उसके बाद का जर्नी कैसे रहा कि टिल दिस फिल्म व्हिच गॉट मेड लाइक ये फिल्म के इंसेप्शन के पहले तक क्या था कि लाइक इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद आपने फिर यही फिल्म की प्लानिंग करना शुरू किया था फॉलोइंग सॉरी फॉलोअर कि उसके पहले भी और कुछ आपने प्लान किया था या बनाया भी था ऐसे कुछ था? नहीं नहीं, सो दिस वाज, आई मीन मतलब वो तो फॉलोअर के पहले तो काफी एक लंबी जर्नी थी, बिकॉज आफ्टर दैट आई वेंट टू मास कम्युनिकेशन कॉलेज इन पुणे, ओके which is Symbiosis Institute of Media and Communications. Now it's known as SCMC, नाम चेंज हो गया है. But so it was a mass comm college where we took film as our specialization. तो it's sort of like it was a film appreciation kind of a course था वो. तो वो 3 साल था. उसके बाद फिर मैं I started working in Pune only. I was really because I'm a Maharashtrian, so I was also watching a lot of Marathi films in those days, and Umesh Kulkarni is somebody who I really looked up to. So I really wanted to work with him. So I started working with him after college. 1 year I worked with him, uh, and then I came to Mumbai, and because my friends from college were all here, I shifted here and I started working in Ad Film House as an in-house assistant director. Uh, I did some of that. Then I did. Then I'm also an editor, so I edited a documentary film. Uh, then then I again did. I was a DA on this Netflix show called Ghoul. ओ If यस you follow this, yeah. राधिका आप्टे वाला यस Yes, yes. So I was director's assistant on that. So during this time, I was also writing something, making something of my own short films. I made 2 short films during this time. One was called a Return Gift, which got selected at the New York Indian Film Festival. Uh, and then I made another short film. तो ये process चल रहा था मेरे बीच, just to practice my own craft, short films बनाना, लिखना, edit करना. And I think somewhere around 2016 or something, this idea for this film Follow came, and I think 2017 में I started writing it. ओके ग्रेट ग्रेट Yeah, ग्रेट तो दैट्स द yeah. रीजन कि मैं वही पूछता हूँ कि देखिए ये फिल्म अगर जिन्होंने नहीं देखी है अगर लाइक थोड़ा भी उनको अगर पता चलना चाहिए फिल्म के बारे में सो वही कि ये फिल्म इट्स अबाउट दीज 3 पीपल आई वुड से especially that one person who is affected by the events which are happening in the city of Belgaum, which actually currently is in Karnataka, जो अभी कर्नाटका में है लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी महाराष्ट्रन्स रहते हैं, मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं. सो इट्स अबाउट हिम. ये एक बोले कि ये जो कैरेक्टर स्टडी है या फिर और ये जो इवेंट्स वगैरह जो हम ये पूरे फिल्म में देखते हैं हर्षद, अ, क्या इंस्पायर किया था आपको ये फिल्म लाइक ये सब लिखने के लिए, ये कैरेक्टर स्टडी और इवन ये फिल्म सेट इन दिस पर्टिकुलर सिटी एंड सेट इन दिस पर्टिकुलर लाइक इन दीज काइंड ऑफ इवेंट्स एज वेल? So I think two reasons, दो reason है इसके. I'm originally from Belgaum. I was doing my engineering there and वो तो things. पता Originally चल from जाता है यार सर, मतलब आप तो फिल्म में है भी और आप कन्नड़ा बोल भी whole रहे. language. Yeah. तो I've grown up थोड़ा around this माहौल and ये सब ये जो चीजें होती थी, जो ये डिस्प्यूट है, जो कुछ लोग हैं जो बहुत पैशनेटली आर फॉर दिस कॉज, एंड some people are on the fence of it, and the other people, let's say the Kannadigas, don't like it and they hate the Maharashtrians for doing that. So I've been watching this since growing up, and तो ये एक दिमाग में था कि ये लाइक, एंड ऑल्सो मी बीइंग अ महाराष्ट्रियन फ्रॉम कर्नाटका, like I used to feel कि okay, I don't feel this that much. I don't feel about this कि why I should feel that Belgaum should be part of Maharashtra.
whereas somebody else, some other Maharashtrian in the same town feels about it very strongly. So that used to intrigue me always, कि ये क्या है ऐसा, like why does this guy believe in this so much? And the other reason was that this film is sort of like I would say like a post 2014 film, where 2013, 2014 we have seen uh, polarization like The nothing, the like rise we of see. right wingism. Yes. Yes, the rise of right-wing ideology and people very strongly adhering to that ideology. And a lot of those people were my friends also. And we sort of like drifted apart in a way, because of political opinions, because of political ideologies. So my friend would believe uh, in that ideology very strongly, and I would be in like complete opposite direction. And most of the time, it sort of soured our relationship. Uh, and I used to again wonder again this thing, that why does this guy believe in a certain leader so much? Mhm. What what is it that makes him uh, so passionate about that person, that he puts everything, like he, for that, like something like this is happening for a greater good. Mhm. Mhm. Uh, and I think there, and that's why I wanted to sort of understand that. And so the distance that had happened between, let's say, me and my friend, or friends in a way, not, there's not one friend, but like friends, I wanted to, sort of bridge that gap, have a dialogue. So Yes. in this film is in a way, a love letter to my friend who I've had political differences with. So that's why the film, that that was the inspiration Oh, in writing this. Yeah. ओके ओके बट देखिए, आपने अभी मैंने मेंशन किया है कि आप भी खुद इस फिल्म में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। देखिए, यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते, लाइक यूजुअली डायरेक्टर्स रहते हैं, लाइक वो कैमरा के पीछे आने का प्रेफर करते हैं। आप इसमें एक बहुत बड़े रोल में है। हाउ वाज व्हाट वाज द चैलेंज इन डायरेक्टिंग योरसेल्फ, और मतलब कैसे, क्या चैलेंज था, और कैसे आपने पॉसिबल कर सका, और पहली बात तो ये डिसीजन आपका पहले से ही था कि व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉर दैट एज वेल, कि आपका कैरेक्टर आप खुद प्ले करेंगे, ये कैरेक्टर पर्टिकुलर? नहीं, ये डिसीजन पहले से तो नहीं था। मैं, मतलब, मैं चाह रहा था कि कोई कोई प्ले करे ये, सो दैट आई कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्टिंग. So we looked for some people, we auditioned for some people, but it didn't work out. As it is, we wanted to cast people from Belgaum because there's a certain tonality to our language. The way we speak Marathi, the way we speak Kannada is very different from the people who, like, it's a Marathi that people don't speak like this in Pune or in Mumbai. हम्म So ours is a very raw sort of हम्म Marathi. हम्म And similarly, Kannada also, the way people talk Kannada, speak Kannada in Bangalore, हम्म we don't speak like that. There's a lot of difference. So it was essential to cast people from that town or nearby town, and it was very difficult because we don't have a culture of like so much acting, and इतना बड़ा कुछ ऐसा थिएटर का सीन भी नहीं है थिएटर बेलगाम में काफी, but not so much, so not a lot of people are also involved. So already वो क्या बोलते हैं, वो पूल बहुत कम छोटा था जिसमें से चूज कर सके. तो ये हो रहा था. We did audition but couldn't find anyone. And I had some experience in acting because इसके पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसमें भी मैंने एक्टिंग कर ली थी. तो फिर वो I had some comfort in that कि okay, I can do it. And also what was happening is that while Raghu, the guy who plays the lead role, when he came on board, we used to practice the scenes. So I used to do lines for him, with him. So when Sachin ke line karte ho, we used to do it, and we got really comfortable as those characters. हम्म So the banter, remember the restaurant scene, तो वो जो banter, जो वो argument, जो वो है, वो बहुत naturally दोनों का, हम लोग का एक chemistry बैठ गया. तो फिर
And like, okay, chalo, then this is like, he's also comfortable doing all these scenes with me. So let's continue with that, because it's his first time also. He's done, like, it's his first feature film as an actor. हम्म, Uh, तो तो जितना, if I could make my actor comfortable and कि, तो then that's great. तो इसलिए I think that was the reason I हम्म, chose to go ahead with और playing और in this इन लाइक character. पहले रघु आए और फिर जाके जो एक्ट्रेस है वो ऑन बोर्ड आए, राइट? और उनके बाद Yes, लाइक yes. उनका लाने का क्या प्रोसेस रहा है, लाइक व्हाट वाज मतलब क्या क्या रहा था वो आने, लाइक आपने काफी सारे ऑडिशंस किए होंगे, लेकिन फिर व्हाट वाज द Yeah. प्रोसेस कि ओके दिस इज द वन आई नीड, दिस इज द कैरेक्टर? No, so for Parveen, again, we tried a lot. We like auditioned many in the city, around the city. Didn't work out. As it is, as I had said, कि मतलब acting का scene ही इतना कम है कि होता है ना थोड़ा वो स्मॉल टाउन वाला, वो भी एक माइंडसेट है कि एक्टिंग, लड़कियां गोइंग इनटू एक्टिंग एंड ऑल दैट, इट्स ऑलरेडी लाइक ऐसा एक टैबू सा, ऐसा एक वो आ जाता है, तो ज्यादा है नहीं। तो already jitne, let's say if I had 10 options for Sachin, somebody would play Sachin, I had 5 options for somebody who would play Parveen. So very less. So it was very difficult. So I was trying to look कि अभी क्या करूं, what do I do? Then I decided, okay, the thing is कि language was also very important. तो मैंने कि our accent and somebody from Hyderabad is same, ओह, very similar. ओके। Yeah, so our Hindi, it's not Hindi actually, Dakhni. We speak Dakhni. So हमारा हमारा Dakhni and Hyderabadi Dakhni is similar, very similar. ओके। Uh, so I thought कि what if I find somebody from Hyderabad, because Hyderabad में तो होंगे actors काफी. So I started looking and I came across Donna. हम्म, And I realized that Donna is to Bengali. How? But then I spoke to her. I realized that she has been living in Hyderabad for a very long time. So she knew the language. And I had obviously seen her in Karwa. And I was like, "Ki, wow. I mean, her performance as Karwa was very good. And opposite Irfan Khan, it was uh, what happens is like if I'm watching somebody with Irfan Khan, I'm only watching Irfan Khan. But in that film, the Donna was amazing, and I was seeing both of them, this, equally. So, and she was, and I did a audition, small audition with her. She was very good, and the only person on this film who was a professional actor was Donna. So it always helps to have somebody like that, because एक्टर के वो जो पॉजेस, एक्टर का जो वो एक बॉडी लैंग्वेज वो होता है, that helps so much to create a rhythm in a scene. And that's what Donna brought, to with proper the body language of it, the rhythm of it, the pauses of it. This helps you with the rhythm of the scene, and also helps the other actors who are non-actors uh, perform the scene better. So that's how Donna came on board. ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। एक्चुअली देखिए, मैंने जब भी फिल्म देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार वाओ, कि क्या एक डीपली रूटेड फिल्म देख रहा हूँ। इट्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। देखिए, इस फिल्म में वो जो नेता रहते हैं और वो बात करते हैं कि लोग को कश्मीर के पॉलिटिक्स के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है, इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है, लेकिन इस रीजन के, इस जगह के पॉलिटिक्स के बारे में यार हार्डली कोई जानता है, और उनको वो जानकारी लोग को पहुंचानी है। और सच में इस फिल्म के द्वारा काफी सारे लोग को पता चलेगा कि व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। क्योंकि हाँ, एक बेलगाम करके एक है, जगह है, उतना मुझे पता था, लेकिन ये सारी चीजें भी हो रही है इतना आइडिया मुझे नहीं था। लेकिन बट थैंक्स टू योर फिल्म हर्षद, की काफी लोग को ये फिल्म पता चले, लाइक ये जगह के बारे में और इस जगह के चीजों के बारे में भी पता चलेगा, एंड व्हाट इज द थिंग। एंड इवन सच में मैंने जब एक पर्टिकुलर सीन मुझे
बहुत ही अच्छा लगा जब ये वो जो कैरेक्टर है राघवेंद्र पवार, वो रिश्ते के लिए लड़की देखने जाते हैं, और वहाँ पे एक लड़की उनको बोलती है कि मतलब यहाँ पे मतलब कितने सारे मतलब मराठीज के पहले और भी कोई होते होंगे, और भी मतलब उसके पहले भी और कोई होते होंगे। इट्स सच लाइक अ डीप डायलॉग कि ये जमीन है, ये जो एरिया है, वो मतलब वो किसी का भी नहीं रहता यार। मतलब मतलब ओवर द टाइम्स वो उनके जो ओनर्स, लाइक जो ओरिजिनल पीपल रहते हैं, वो चेंज होते रहते आगे आगे, मतलब वो होते रहते बदलाव, और वो उनको ही एक्सेप्ट करना रहता है। लेकिन वो उनका जो आइडियोलॉजी, जो माइंड फ्रेम रहता है, वो नहीं बदलता है, और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इट्स सो सो ब्यूटिफुली रिटन बाय यू हर्षद। सो वो अमेजिंग लगा था मुझे वैसे। सो यही सारी चीजें हर्षद कैप्चर करने में आपको, मतलब पूरा शूट में आपको कितना टाइम लग जाता है ये शूट खत्म करने के लिए, और व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस द एंटायर शूट? Yeah, it took us, I mean, like firstly, it was a crowdfunded film, वाओ। at least in the beginning of it. So when we started making this film, we thought, okay, we tried to meet a few producers, but didn't work out. Uh, and we thought, okay, let's go the crowdfunding way. So we managed to raise some funds, but it was only enough to shoot the film, not edit and पोस्ट do the प्रोडक्शन rest में। of the production. So we sort of did a reverse engineering, or I would have said, we had to compromise on certain situation, but Devashish has told me not to use that word and use recalibration. So, and he's very right. Recalibration is the word. That we sort of recalibrated on how we can make this film in this kind of budget. So we had certain funds. We decided, okay, then we have 16 days to shoot this film. So we did that. 16 days का एक schedule बना, and we shot and then we made a rough cut, and उसमें then we were like okay, यहाँ पे कुछ चीजें missing है, because we were also dealing with a different narrative structure. It's not a very conventional linear structure of the film. करेक्ट। We go back in time, and so we wanted to make it as clear as possible, as so that the audience don't get कि अरे ये क्या हो रहा है, because telling the story was very more important than sort of experimenting with a narrative. Of course, the intention was to experiment with narratives, but also in a way that provides clarity. करेक्ट। So we did that. We made a rough cut out of it, and then we realized कि okay, अभी 2-3 दिन का shoot एक हमको लगेगा. We need something here, something there. And this was during February 2020. And so we decided कि चलो March 2020 में करते हैं shoot. And COVID happened. And COVID happened, so everything got shut, and so we got stuck with our rough cut, and we just sat at home. And then we sat and like कि okay, अब कब क्या होगा पता नहीं, ये कब, when is this going to, and then like तब तो फिर कोविड चल रहा है, तो फिर then you're like कि more existential question चल रहे दिमाग में कि क्या पता अब तो कभी फिल्म आएगी नहीं आएगी बाहर. That was सब. So we stayed with the film, and then finally I think somewhere around in 2021 के beginning में we got a chance to finish that small part. ओके। And so yeah, I think the difficult part was to just stay with that film for that one whole year, not knowing whether this will ever come out or not. ओके। Will this ever see the light of the day? So that was a little difficult, because we so passionately, for like all of us, everyone who's involved in this film except for Donna, it's their first film. It's our ओह वाह। first film. Yeah. So for all of us, it was such a this thing like labor of love. तो हमारे लिए कि ये कैसे कब बाहर आएगी, तो वो 1 साल का जो गैप था जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो थोड़ा was difficult कि what do we do next.
ओह, ओके। बट देखिए, आप, मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, दिस फिल्म हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर इन आईएफएफआर, विच इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रॉटरडम। फिर जाके इंडिया प्रीमियर मामी में हुआ था और धर्मशाला में भी हुआ। आपको देखिए, फेस्टिवल्स में आप भी काफ़ी सारे ऐसे जनरल पब्लिक में और इवन क्यूएनएज में इंटरेक्ट करते हो के वैसे रहेंगे। आपको क्या लगा कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे इस फिल्म को एब्जॉर्ब कर रही है और मतलब ये कर रही है? आपको आपके लिए, आपको ऑडियंस के लाइक इसमें क्या रिसेप्शन रहा है आपके फिल्म के ऊपर, फॉलोअर के ऊपर? आप वो मेंशन कर सकते हैं? नहीं, extremely good actually, surprising in many ways because मुझे पहले डाउट आता था कि ये तो यार एक स्टोरी है जो बेलगाम की स्टोरी है, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरी. It's also not a very conventional, let's say, like a Kannada film or a Marathi film. It's both. So will audience be interested in watching something like this about a region that is so obscure? कुछ पता नहीं है इसके बारे में क्या. uh, तो वो एक सेल्फ डाउट था कि मतलब लोग आएंगे नहीं दे आएंगे, तो which was, I think, which also kind of is true because not a lot of people came to watch the film. It wasn't like a must watch kind of a thing. Maybe वैसे उतना ये नहीं था. तो मतलब कहीं पे like I think before Mami Film Companion in their article mentioned follower, तो वो एक था, बट इतना कुछ ये नहीं था उसके अराउंड. तो आई वॉज एनीवे डाउटफुल कि लोग आएंगे नहीं आएंगे. बट देन जो ऑर्गेनिक क्राउड आया, हम्म। वो उन्होंने देखा, एंड देन सम ऑफ द मैसेजेस दैट आई गॉट, एंड द फर्स्ट स्क्रीनिंग तो क्यूएनए था, तो फिर उसमें तो पर्सनली आके लोग मिले थे. तो वो रिएक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन ऑडियंस इज वाचिंग, राइट? उसके पहले तो सब फिरंग ऑडियंस थे, करेक्ट। लाइक रॉटरडैम, क्रैको. तो यहाँ पे तो दिस इज द फर्स्ट टाइम Indians are watching, and I was really excited कि वो लोग को कैसा लगेगा. तो बहुत अच्छा लगा when they, some of the things that they came up and said, and especially about friendship and politics and the thing about it, and how they have also suffered certain things, and they, like their own personal stories of how they have in families and friends, and so all that was nice. Some people talked about how Belgaum, like they didn't know about Belgaum, but now they know, like about like you, like what you also mentioned, uh, that. And Mami mein, there was this one moment which was very, I think, very special. I think, and like every filmmaker should have that kind of moment. I feel, कि क्या हुआ कि मैं, ये तो सेकंड या थर्ड स्क्रीनिंग था, मैं था इन्फिनिटी में था, मलाड, एंड वो उसमें क्यूएनए नहीं था. ओके। तो आई हैड जस्ट गॉन टू सी कि कितने लोग आ रहे हैं, तो दिस थिंग, एंड माय फैमिली आल्सो हैड गॉन टू सी द फिल्म देयर. तो मैं उनको छोड़ के मैं बाहर बैठा था, मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर फिल्म खत्म हुई, एंड पीपल केम आउट, एंड ऑब्वियसली नोबडी नोज आई एम द फिल्म मेकर एंड ऑल दैट. तो मैं रुका था, आई वाज टॉकिंग टू समबडी, एंड a group जो was just passing by, and I could hear them say कि great film, love the film, amazing film. And that moment, no, when कि लोग तो सामने आके ग्रेट फिल्म, अमेजिंग फिल्म तो बोल सकते हैं, बट कहीं और से तुम्हें अगर सुने बिना, यू नो you meeting them, करेक्ट। that feeling is something, that those guys are discussing the film and just they have these comments, and then this guy suddenly sees me and he recognizes me like, अरे आप फिल्म में हो ना? तो I said हाँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ. अरे ओ अच्छा, डायरेक्टर भी हो. Then नहीं, we, yeah, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं वो सच में होता है, क्योंकि देखिए यूजुअली डायरेक्टर्स अपने आप को अगर फिल्म में जब भी लाते हैं तो तभी क्या, हाँ साइड में फोटो या कोई मरा हुआ कोई नहीं है तस्वीर तो मैं खुद का लगाते थे। आपकी परसेप्शन भी मेरा वही था कि देखो लाइक, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही आपका फोटो आता है इन द मोबाइल स्क्रीन जहाँ पे वो देखते हैं, yeah, और फिर जाके ओके मुझे लगा चलो हाँ ये डायरेक्टर है ऑब्वियसली, तो हाँ लो बजट है तो मतलब उन लोग ये कर लेंगे। फिर जाके आप भी एक मेजर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइजिंग था इसलिए, और वो तो डेफिनेटली होना ही है लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है इसलिए। yeah.
नो इट वाज एंड धर्मशाला का जो रिएक्शन था वो तो सबसे बेस्ट था आई थिंक द रिस्पांस दैट आई गॉट इन धर्मशाला वाज अमेजिंग सो दैट वाज ओके, सो एक बात बताइए, ये फिल्म चलो मैंने देखी है, फेस्टिवल गोवर्स ने देखी है, काफी सारे मतलब दूसरे फेस्टिवल गोवर्स ने भी देखी है। आप बताइए यार, जनरल पब्लिक कब देख पाएगी फिल्म, लाइक व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिलीज, मतलब नेशन वाइड, या मतलब जैसे लाइक पैन इंडिया पूरी रिलीज होने वाली, या फिर अगर ओटीटी रिलीज भी है तो कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फिल्म को आने के लिए? So we are trying to do that, and I think something very soon might happen. अरे, Uh, हाँ तो इट्स ऑन द कार्ड्स बट वो ऑफिशियल नहीं है कुछ तो आई नो इट्स ओके। कांट रिलीज हम बोल देंगे हाँ ऐसा सो बट आई विल ऑब्वियसली लेट यू नो सून बट दैट्स द प्लान कि हम बिकॉज दिस इज आई मीन फिल्म बनाई है लोगों तक पहुंचनी चाहिए दैट्स द आइडिया एग्जैक्टली। तो वो हाँ तो वो करना ही है किसी भी हाल में तो वो कर रहे हैं try कर रहे हैं मतलब कीप यू पोस्टेड होपिंग, व्हेन एब्सोल्युटली, मैं आशा रखता हूँ कि ये फिल्म एटलीस्ट बहुत लोगों तक पहुंचे, मुंबई में बहुत सारे लोग आए। इट्स नॉट जस्ट अ मराठी मराठी फिल्म, इट्स लाइक हिंदी में भी है, मराठी कन्नड़ा में भी है, सो पीपल शुड डेफिनेटली चेक इट आउट ऐसे। जस्ट एक आखिरी क्वेश्चन था, और मैं ये क्वेश्चन सभी को पूछता हूँ, सभी फिल्म मेकर्स जो भी आए मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे यूट्यूब चैनल में। आप अपने लाइक, सिंस मैं एक सिनेफाइल हूँ, दिस यूट्यूब चैनल इज मोरली अबाउट सिनेमा एंड फिल्म्स। आप बताइए कि आपके लाइक टॉप 3 या टॉप 4 फिल्म्स, ऑल टाइम ग्रेट फिल्म्स कौन से हैं? ऑल टाइम ग्रेट फिल्म्स yeah, I mean, obviously very difficult to choose like that. But I can tell you the films that probably shaped Yeah, uh, good, me a good. little bit, and of course, then in by default they become your all-time favorite films. Uh, Taxi Driver, Okay. uh, 12 Angry Men, Wow. uh, Force Majeure, Okay. Okay. yeah, and one very like I don't know how many people know about this film, but I love this film so much. It's like a comfort film. I keep going back to it always. It is Richard Linklater's Suburbia. Oh, okay. Yeah, have you seen it? नहीं, मैंने लाइक रिचर्ड लिंकलेटर की लाइक सिर्फ बिफोर ट्रायोलॉजी, बॉयहुड, वही सब वैसे देखी है। और एक लास्ट ब्लैक फ्लाइंग जो उनकी एक, काफी अच्छी अंडररेटेड फिल्म आई वुड से, वो है बस। बाकी सबोबिया मैंने कभी, पता नहीं है मैंने ये कभी आई थी, सो। Yeah, it's a 1996 की ओके, फिल्म. ओके। बहुत अच्छी फिल्म. It's like very Richard Linklater world. But so good. I mean, Slacker and Dazed and Confused तो है ही, but Suburbia is uh, like a. I always keep going back to that film. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, हर्षद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए इस लाइक शॉर्ट इंटरव्यू में। बहुत मजा आया आपके फिल्म के बारे में और भी कुछ जानने के लिए, क्योंकि मैंने फिल्म तो देखी, लेकिन लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड मेकिंग दिस फिल्म, वो सब मुझे इस इंटरव्यू के द्वारा मुझे जानने मिला। और आई एम श्योर काफी सारे लोग को जानने मिलेगा कि what was like what's the like how to make a film लाइक दिस, और मतलब एक क्राउड फंडेड फिल्म भी कैसे बनाया जाए, और जैसे इस लेवल पे लाया जाए। सो यस, थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू यू इन फ्यूचर। आप बोल रहे कि लाइक समथिंग इज गोइंग ऑन अबाउट द रिलीजेस, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। आई एम होपिंग कि जल्द से जल्द आपकी फिल्म रिलीज हो जाए, सो पीपल, लोग देख सके आपकी फिल्म। सो यस, थैंक यू सो मच हर्षद, एंड गुड बाय। Thank you. Thank you for having me.